Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 2, and the name of our unit is Resources and Their Types. And today I will give you a complete introduction of this unit. So my dear students, on page number 13, there are student learning outcomes which are for the parents and the teachers to understand that by the end of this unit, all the students will be able to understand and cover these points, these objectives. So my dear students, one by one, we will discuss these objectives with the reading pages. So in this unit, you see all kinds of resources around. These are natural, human, and capital in nature. In this unit, you will learn about all of them and how they are dependent on each other. You will learn about goods and services and the relationship between buyer, seller. You will also understand that how people fulfill their needs in limited resources. So this unit is all about different types of resources. जो हमें अपने इर्द गिर्द नजर आते हैं, हम उनको सेग्रीगेट कर सकेंगे कि कौन से जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कौन से रिसोर्सेज ह्यूमन होते हैं, and which resources are capital resources. We will also understand the relation between buyer and seller और कैसे हम लोग इन resources के ऊपर dependent हैं. We will discuss all about this in unit number 2. So my dear students, from here we will move forward towards lecture number 1. So when we will start lecture number 1, we will define the term resources. We will also state type of resources. So कौन से resources होंगे? Natural resources, human resources, and capital resources. So the page that is included is page number 14. इसके ऊपर आपको नजर आ रहा है कि resources को define किया गया है. फिर 3 types of आपके जो resources हैं, उनको हम name out सिर्फ करेंगे. उनको हम divide कर लेंगे कि जो resources हैं वो ये 3 तरह के resources होते हैं: natural, capital and human resources. And then we will move forward. ये देखिए आपको यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं natural resources, human resources and capital resources. And then we will move forward towards lecture number 2. So the objectives that will be covered here will be, first part हम इस objective का सिर्फ cover करेंगे. So the students will be able to identify natural resources. और natural resources कौन से होते हैं? Plants, animals, water, air, land, forest, soil. And the page that is included is page number 14, 15 and 16. So आपको natural resources के बारे में हम पढ़ेंगे और कौन से natural resources होते हैं? Plants, animals, water, air, land and forest. These are all natural resources जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं, जो nature में naturally exist करते हैं, जिनको human beings ने नहीं बनाया. They are called natural resources. So my dear students, then we will move towards lecture number 3. So the students here will be able to understand what are human resources. So human resources like farmers, builders and painters. So the page that is included is page number 16, 17 and 18. And then we will move towards lecture number 4, same SLO, but its third part, which is capital resources, will be identified here like computers, factories, and buildings, etc. And the page that is included is page number 18 and page number 19. And then we will move forward towards lecture number 4. And the students will identify, we will move towards lecture number 5. And the students will identify capital resources. ये हमने कर लिया है. We will move towards lecture number 5. Lecture number 5. Define the terms goods, services, buyers and sellers and identify the main goods and services of their local area. So आप लोग इस लेक्चर में आप लोग जो है वो डिफाइन कर सकेंगे कि बायर्स और सेलर्स कौन होते हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि जब चीज़ों की खरीदो फरोख्त होती है तो कुछ चीज़ें आप बाय करते हैं, तो यू आर द बायर, और जो शॉपकीपर आपको चीज़ें सेल करता है, ही इज़ द सेलर.
तो इसी तरीके से हम बायर्स और सेलर्स जो है वो मार्केट के अंदर जिस तरीके से होते हैं हम उनको जो है यहाँ पर पढ़ेंगे और हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे मेन गुड्स और सर्विसेज को भी. सो द पेजेस दैट आर इंक्लूडेड इज पेज नंबर 19 एंड पेज नंबर 20. Then we will move towards lecture number 6. And in this, students will recognize the need for interdependence as not all goods and services are available in their area. ठीक है, तो आप लोग interdependence जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो है हम मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं. So the pages that are included is page number 20 and then we will move towards lecture number 7. And here you will define scarcity. So scarcity जब भी किसी चीज़ जो है वो कम हो जाती है तो कैसे जो है हम human needs को fulfill करते हैं. We will discuss about this in lecture number 7. And then we will move towards lecture number 8. And here you will recognize that people make economic choices because goods and services are limited. ठीक है, कैसे जो है हम चीज़ों की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम इकोनॉमिक चॉइसेस करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं और उनकी नीड्स को पूरा करना है. हर इंसान को फूड भी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए. जो भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द अवेलेबल हैं वो हर इंसान को उनकी ज़रूरत है. तो इसके लिए हम जो मुख्तलिफ चॉइसेस जो है वो अडॉप्ट करते हैं दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक चॉइसेस. और इसके बारे में हम लेक्चर नंबर 8 में पढ़ेंगे. And the pages that are included is page number 21 and 22. And then we will move forward towards lecture number 10. And project 2 is given here. The pages that are included is page number 23. और इस प्रोजेक्ट में हम लोग जो हैं वो डिफरेंट जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं हम उसके बारे में ये प्रोजेक्ट बनाएंगे. And then we will move forward towards the review of the lecture unit जिसमें मैं आपको तमाम पूरे जो यूनिट है उसका रिव्यू दूंगी और मैं आपको असेस भी करूंगी कि क्या आपने इस यूनिट से सीखा है. आपकी असेसमेंट होगी, आपको मार्क्स दिए जाएंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर विल बी रियली fun for you. You will learn a lot of things from this lecture. So until then, हम lecture number 1 start करेंगे इसके बाद. So until then, keep everybody around you safe. Have a good day and Allah Hafiz.